हेलो दोस्त, आज का हम टॉपिक है रिवीजन करने वाले हैं और इसमें बकचोदी नहीं करेंगे। तो गाइस पहला क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च क्या है? तो भाई ये एक साइंटिफिक मेथड है जो कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने काम आता है। इसको एस्थेटिकल, एनालिटिकल, मैथमेटिकल में यूज करते हैं। बस। और इसका हमारा सिग्निफिकेंस हो गया ऑप्टिकल यूज ऑफ रिसोर्स, कॉस्ट रिडक्शन, हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, रिस्क एनालिसिस। ठीक है। Better and planning control, risk analysis, handle complex problem, improve quality of decision, optimal use of resource। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, डिस्कस द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ ओआर। ओआर का मतलब ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट है इन मॉडर्न बिजनेस एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। तो ठीक है, इसका स्कोप बताते हैं। तो भाई इंजीनियरिंग का स्कोप भाई बहुत सारा है भाई। प्रोडक्शन को मतलब मैनेज करने में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग का काम आएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग का काम आएगा, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में, लॉजिस्टिक मतलब जो पार्सल कुरियर रहते हैं उन लोग उसमें काम आएगा, इंजीनियरिंग में काम आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम आएगा। और इसका लिमिटेशन ये है कि इसमें बहुत सारा पैसा थोड़ा मोड़ा खर्च होता है, एक्यूरेट डाटा चाहिए, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स इसमें होता है, इग्नोर ह्यूमन फैक्टर को इसमें इग्नोर किया जाता है, नॉट सुटेबल फॉर क्वालिटी प्रॉब्लम, ये उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो आप लोग समझिए इसका मतलब क्या होता है। स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम लोग का इसका स्कोप है, मार्केटिंग में स्कोप है, इंजीनियरिंग में स्कोप है, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन में इसका स्कोप है, और इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्कोप है। इतना स्कोप है। और इसका लिमिटेशन हो गया कि ज़्यादा पैसा रहता है, एक्यूरेट डाटा चाहिए, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स इसमें होते हैं, इग्नोर ह्यूमन फैक्टर को, इग्नोर एंड ह्यूमन फैक्टर। इसमें इमोशन को साइड में रखा जाता है, बिहेवियर आर नॉट फुली कंसिडरेड इसमें होता है, नॉट सुटेबल फॉर क्वालिटी प्रॉब्लम्स इसमें ये होता है। ठीक है। ऐसे ऐसे पढ़ के आप लोग जानिएगा तो थोड़ा मोड़ा आपका इजी होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ ओआर क्या होता है। ओआर मतलब ऑपरेशनल रिसर्च हुआ। इसमें हम लोग एनालिटिकल, मैथमेटिकल, स्टैटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ओआर एक जो है मैथमेटिकल साइंटिफिक, अरे यार मैं खुद गलती बोल रहा हूँ क्या। ओआर रिसर्च, ओआर ओआर का मतलब ही होता है ऑपरेशनल रिसर्च इज ए साइंटिफिक मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग दैट इज यूजेज एनालिटिकल। हाँ सही बोल रहा था। ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, स्टैटिकल, एनालिटिकल, साइंटिफिक मेथड से हम लोग करते हैं इसमें, जिसमें हमारा सिग्निफिकेंस हो गया, एनालिसिस, और रिस्क एनालिसिस, बेटर प्लानिंग एंड कंट्रोल, और क्या हुआ, कॉस्ट रिडक्शन, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन। ये हमारा सब आ जाएगा। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन, कॉस्ट रिडक्शन, हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है उसको हैंडल करना। भाई मतलब माइंड को स्ट्रेस नहीं दो और चिल करके पढ़ो। इससे ये साबित होता है कि तुम पढ़ लो। और स्कोप इसका क्या हुआ भाई, स्कोप बहुत है इसका इंजीनियरिंग लाइफ में। जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग में हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में हो गया, और क्या हो गया, लॉजिस्टिक में हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हो गया, प्रोजेक्ट में हम मैनेजमेंट में हो गया। कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको नेटवर्क टेक्निक मतलब लिमिटेशन इसमें हो गया कि डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट डाटा। इसमें ऑन एक्यूरेट डाटा चाहिए, डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट डाटा, हाई कॉस्ट टाइम, हाई कॉस्ट एंड टाइम कंजप्शन इसमें है भाई। इसमें टाइम और कॉस्ट, पैसा दोनों कंजप्शन होता है इसमें इंजीनियरिंग में। लिमिटेशन ये सब। मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स मॉडल इसमें आ जाएंगे, इग्नोर ह्यूमन फैक्टर, नॉट सुटेबल फॉर क्वालिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। What is ABC analysis inventory management? How is it for stock classification? Inventory items are divided into three categories: high, moderate value and low value। ठीक है। हाई वैल्यू में हमारा ज़्यादा पैसा चल रहा है, बजट होता लगता है, मॉडरेट में कम लगता है, लो वैल्यू में सबसे कम होता है। एबीसी एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन
Prioritize inventory control efforts and classifying stock based on value, economical inventory management. We see license inventory management that classify into different categories based on their annual consumption value. It is based on the Pareto principle, which states that a smaller number of items account for a large portion of total inventory value. Use of analysis in stock allocation reduce inventory improve through assist. फिर आता है what is the simplex method of solving LPP? Describe the advantage of graphical method. The simplex method is algebraic method होता है optimization technique used to solve LLP involving then two decision variables. Basic step of simplex method formula will be convert into a standard form or construct initial simplex table. Advantage of simplex method or graphical method handle more variables as systematic and efficient, give exact optimal solution, suitable for large scale problem additional information, suitable for large scale problem additional information. The northeast corner simply procedure used to obtain initial basic visual solution of transformation problem. It is called node because application starts from top top left cell of very simple and quick method useful for beginners requires minimum consumption. Limitation where solution may be far from optional, ignore cost factor completely. Vowel approximate palm is a technique which is used to better used to perform better used to palm is a technique obtain a better initial basic feasible solution for the transportation. It generally give a solution. It, it give a solution closer to the optimal cost, northeast corner, and the least cost method. It generally give a solution closer to the optimal cost compared to northwest corner and least cost method. It generally gives a solution compared to the optimal cost compared to northwest corner and least cost method. It generally gives a solution closer to the optimal cost compared to the northwest corner and least cost method. Step of palm. Calculate penalty for each row and column. Select the high penalty. Allocate location. Like
It is just supply and demand. Repeat the process. भाई रखो यार, डर लग रहा है कल के लिए।